So this is another question from past paper, from model papers 2017. An electron in the hydrogen atom makes a transition from fifth to third orbit. Let's say we have a nucleus. This is the first orbit around the nucleus. This is the second orbit. This is the third orbit. This is the fourth orbit. And finally, this one is the fifth orbit around the nucleus. An electron is initially in this orbit. This is Ni, orbit number 5, initial orbit, and then the electron jumps into this orbit. So the final orbit here, that is Nf. So Ni is equal to 5 and Nf is equal to 3. So we write it here in the data that we have Ni is equal to 5 and F is equal to 3. Now find the wavelength. हमें lambda मालूम करना है, frequency, nu, and the wave number, which is actually v bar, wave number of the radiation emitted, जो radiation यहाँ से निकलेगी, और हमें Rydberg constant provided है, that is 1.09 exponent 7 meter inverse. Make sure आप यहाँ -7 ना लिखें. Majority of the students ये mistake करते हैं कि यहाँ पे -7 लिख देते हैं. ओके तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट में है तो फिफ्थ ऑर्बिट में उसके पास एनर्जी ज्यादा है. जब वो फिफ्थ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में आएगा तो वो अपने अंदर से एनर्जी लूज करेगा, और जिस फॉर्म में एनर्जी लूज करेगा वो फोटोन होता है जिसकी एनर्जी होती है h न्यू. तो हमें ये बताना है कि व्हाट इज द वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी एंड द वेव नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन of the photon which is actually emitted over here. तो हम स्टार्ट लेंगे इस इक्वेशन से. दिस इक्वेशन वी हैव ओवर हियर 1 over lambda equals to Rydberg constant into 1 over nf square minus ni square. So let's begin with the solution. So 1 over lambda is equal to Rydberg constant 1 over nf square minus 1 over ni square. 1 over lambda is equal to Rydberg constant. हम Rydberg constant की वैल्यू आखिर में पुट कर सकते हैं. We don't have any problem with that. 1 over, that is 3 squared minus 1 over 5 squared. 1 upon lambda is equal to Rydberg constant 1 upon 9 minus 1 upon 25. 1 upon lambda is equal to Rydberg constant, and we can write it down over here, 9 multiplied by 25, 25 here minus 9 here. So 1 over lambda is equal to RH, and that is 16 divided by, that is 225. Now you can finally find the value of lambda now you can finally find the value of lambda very easily. Lambda is equal to, you can cross multiply everything, it will become 225 divided by 16 RH. अब आप RH की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो lambda will be equal to 225 divided by 16, और RH की वैल्यू है 1.09 exponent 7, which will be equal to, okay, so lambda turns out to be 1.29 exponent minus 6 meters, which is quite long wavelength, जिसको आप expect कर सकते हैं कि it will be in infrared region. और हमें पता भी है कि थर्ड ऑर्बिट की जो वेवलेंथ होती है वो इंफ्रारेड रीजन में होती है. नाउ हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो ये कि वी नीड टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी. वी हैव फाउंड दिस, नाउ वी नीड टू फाउंड दिस फ्रीक्वेंसी. हमें ये बात मालूम है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू frequency multiplied by wavelength. You have learned in the beginning v equals to f lambda. हम f को न्यू से डिनोट करते हैं. अब हमारे पास चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो इसकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट होगी, तो c इक्वल्स टू न्यू मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा, और न्यू विल बी इक्वल टू c डिवाइडेड बाय लैम्डा. न्यू विल बी इक्वल टू 3 exponent 8
divided by 1.29 exponent minus 6. So let's find the frequency. 3 exponent 8 divided by 1.29 exponent minus 6, that is 2.32 exponent 14 hertz. This is the frequency. Now what is wave number? Wave number is actually the reciprocal of wavelength. So wave number will be equal to 1 upon 1.29 exponent minus 6, which will be equal to 1.29 exponent minus 6 reciprocal, that will be 7.75 exponent 5 meter inverse. This is the answer of wave number. Thank you very much. I will see you in the